आउटर टेबल में जो 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 पेरियास्टल वेसल्स है वो रप्चर हो चुकी होती है, तो दैट इम्पीड्स द हीलिंग ऑफ दिस कैलस फॉर्मेशन, यानी वो ruptured osteoid, the ruptured periostal vessels, they prevent the formation of the soft callus. skull fracture में होता उसमें क्या है, 10 दिन के अंदर अंदर the outer table unite together and then the inner table वहाँ पे calcification शुरू हो जाती है जिससे वो healing होती है, and this calcification usually occurs about 2 weeks of the inner table of the skull. अब अगर दांत टूट जाए तो healing first of all 1 to 2 days में, वो जब ब्लीडिंग शुरू करता है तो 1 to 2 days में ब्लड स्टॉप हो जाता है, और फिर उसके बाद इसकी ऑब्लिटरेट कर देता है या ऑब्लिटरेशन होती है बाय द फाइब्रस टिश्यू अबाउट 14 days, 2 weeks में इसकी ऑब्लिटरेशन हो जाती है इस फाइब्रस टिश्यू की, और इसके बाद 1 साल तक फिर अगर बोन निकलता है न्यू बोन फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। और इसके बाद फिर नेक्स्ट आता है मेडिकली गली के आइदर फ्रैक्चर इज एंटीमार्टम और पोस्टमार्टम, क्या इस वायलेंस या ट्रामा या इस लड़ाई झगड़े से पहले ये फ्रैक्चर है, पुराना फ्रैक्चर है, या फिर इसी वायलेंस में इसका फ्रैक्चर हुआ है। Such a case is also brought to you, and the question is raised by the Honorable Court that tell about the fracture, whether these are antemortem or postmortem. Remember one point that just before the fracture, in living person, just before or just after, this not quite different. There may be some effusion of blood. Of course, in antemortem, the effusion is somewhat more than the postmortem, because in postmortem there is no any circulation of blood. So when the court asks that whether this is antemortem, यानी जब ये शख्स जिंदा था उस वक्त फ्रैक्चर था या उसके मरने के बाद फिर ये फ्रैक्चर हुआ है, तो इस तरीके से just before the death or just after the death अगर फ्रैक्चर हो जाए, not some the great difference. Of course, some effusion of the blood is more in antemortem fracture. Fracture few hours, अगर death से चंद घंटे पहले fracture हो जाए तो there will be extravasation of the blood in subcutaneous regions, extracellular blood occur, there may be edema occur, and there will be swelling, infiltration of this cellular infiltration in the surrounding tissue. Few hours before the death fracture occur. If there is a long period before the death, long period both are so microscopic and naked eye changes can be seen. Microscopic naked eye में आप देखते हैं वहाँ पे swelling नहीं होगा और redness नहीं होगा, और फिर माइक्रोस्कोपिक में जो है वो healing प्रोसेस हो चुका होगा, ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी होगी बोन की, सॉफ्ट कैलस बन चुका होगा या बोन मैट्रिक्स बन चुका होगा, क्लॉट पहले से बन चुका होगा, एंड हीलिंग दी फाइब्रोसिस बन चुका होगा, बिकॉज ही वाज अलाइव लॉन्ग पीरियड बिफोर द डेथ अगर फ्रैक्चर ऑफ लॉन्ग बोन्स। इसके अलावा अगर लॉन्ग पीरियड बिफोर फ्रैक्चर हुआ हो तो लॉन्ग बिफोर फ्रैक्चर लॉन्ग बोन्स की स्पेशली लेग बोन्स में वहाँ पे जो फेट है उस बोन में, that may be embolized, that may be carried to the lungs, to the brain, to the heart, इस जिसको कहते हैं कि fate embolism. In case of long period before death, there will be fate embolism number 1, or there may be petechial hemorrhages, that is small spots, red spots of blood in the capillaries, weakened portion of capillaries वहाँ पे, it may be seen in the lungs, in the brain, in the intestine, or in the conjunctiva, subconjunctival hemorrhage वहाँ होंगी, petechial hemorrhages, usually they are associated with the asphyxia. Now, you know there is transverse fracture or simple fracture.
single fracture and transverse fracture, spiral fractures and multiple fractures. These are compound fractures. These are the spiral, oblique, this is the transverse. So these are the cumulative fracture, there are multiple fracture also of the fingers, and over here again fractures and angular fracture. This is angular fracture and the bone is displaced, right? And over here again you see the transverse fracture and the bone is displaced and multiple fractures. These are fracture lines, and this is an open fracture. You can see the bone, right? This is the open fractures. This is the open fracture or the compound fractures. It is communicated with external air, and infection may pass through this to the bone, may result in osteomyelitis or in a delayed healing. Again, the oblique fracture. So these are the different types of fractures. Now come to the injury to the joints. Injury to the joints, these injuries may be sprain, मोड़ना किसी चीज को, torsion, subluxation, अपने जगह से subluxate कर जाए joint, dislocation, बिल्कुल निकल जाए bone, dislocate हो जाए. So, and this joints dislocation or injury to the joint are classified into acute and chronic. Acute means single trauma. एक ही चोट लग जाए किसी को और इसका बोन डिसलोकेट हो जाए या स्प्रेन आ जाए, टॉर्जन हो जाए, ब्लीडिंग होती है, सबलेक्सेशन हो जाता है, सिंगल ट्रामा से दैट इज द acute केस. क्रोनिक में ये मल्टीपल रिपीटेड ट्रामास, जैसे कि फुटबॉलर उसके नी जॉइंट में होता है या कोई और ऐसे वर्क होता है या एथलीट्स में होती है, रिपीटेडली उसके जॉइंट्स में ट्रामा लगता रहता है तो क्रोनिक में चला जाता है. सबसे पहले वी डिस्कस द एक्यूट लीजन. एक्यूट में ये है कि ट्रामा इन्वॉल्व द साइनोवल मेम्ब्रेन ऑफ द जॉइंट. जॉइंट के अंदर जो साइनोवल मेम्ब्रेन है या आर्टिकुलर कार्टिलेज है, दैट साइनोवल मेम्ब्रेन एंड आर्टिकुलर कार्टिलेज is damaged and vessels are damaged. There may be or may not be accumulation of the blood. तो इतनी ज़्यादा accumulation of blood नहीं होती. हाँ, अलबत्ता अगर वहाँ पे कोई sprain हो या fracture हो या फिर ये hemorrhagic diathesis हो, blood distress हो, leukemia वगैरह या कोई और स्कर्वे वगैरह हो, तो ऐसे कंडीशन में ब्लड ज़्यादा अकोमुलेट होता है जॉइंट में और स्वेलिंग हो जाती है और सीरियस फ्लूइड होता है, एडिमा होता है. सो दिस ब्लड अकोमुलेशन यू विल अकर इन स्प्रेन में, यानी अगर वो उसका टॉर्जन हो जाए, जॉइंट का मुड़ जाए फोर्सिबली या फ्रैक्चर हो जाए और हेमरेजिक डायथेसिस जैसे कि ल्यूकीमिया, स्कर्वे, बरपरा वगैरह. अब उसके बाद फिर जब ये ब्लड कलेक्शन होती है, फिर ये हेमेटोमा बन जाता है. हेमेटोमा इज ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम द साइनोवल मेम्ब्रेन एंड देयर इज इनवर्ड ग्रोथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. यानी जॉइंट के अंदर ट्रॉमा हो जाए, ब्लीडिंग होती है, हेमेटोमा बन जाता है, सीरियस फ्लूइड, एडिमा, फिर वहाँ पे फाइब्रस टिश्यू की इन ग्रोथ हो जाती है, तो वहाँ पर हेमेटोमा ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, इन ग्रोथ बाय द कनेक्टिव टिश्यू. हेमेटोमा बन जाता है by the ingrowth of connective tissue. This results in fibrous membrane inside the joint between the synovial membrane या the articular cartilage के बीच में fibrous membrane बन जाती है. This is called penis. This fibrous membrane, it is called penis formation, right? Results in the formation of fibrous membrane, penis formation. This penis formation, this separates the articular surfaces. अब फर्स्ट क्या, नी जॉइंट है, ऊपर जो बोन है, फीमर है, टिबिया, फेबुला, इन दोनों के जो आर्टिकुलर सरफेसेस है उनके बीच में ये बन जाता है पेनिस फॉर्मेशन.
and it separates the articular surfaces, और जिसकी वजह से ये जो जॉइंट है ये बढ़ जाता है, इनलार्ज हो जाता है, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू। ये जब ग्रेनुलेशन टिश्यू इसमें बन जाती है, फॉर्मेशन ऑफ द ग्रेनुलेशन टिश्यू, दिस ग्रेनुलेशन टिश्यू रिजल्टिंग इन एंकाइलोसिस। Ankylosis. This ankylosis is rigid and the bone is stiff, and the movements at the joints are restricted. The joint is stiff in between the bones and movements are restricted. So this is about this acute lesion. Now come to the chronic lesion. Acute lesion में एक और इसमें याद रख लें कि जो नी जॉइंट है इसमें जब सडनली फोर्सिबली ट्विस्टिंग होती है रिपीटेडली, जैसे फुटबॉलर की, इस जॉइंट्स के अंदर नी जॉइंट के फाइब्रोकार्टिलेजिनस जो मेम्ब्रेन है, फाइब्रोकार्टिलेजिनस मेनिस्की जो है वो टेयरिंग होती है, वो सेपरेट हो जाती है, जिसकी वजह से वो जॉइंट में वहाँ रह जाता है एंड एक्ट एज अ फॉरेन बॉडी, और इट इज आल्सो कॉल्ड मॉइस ऑफ द जॉइंट। ठीक है जी। नो क्रॉनिक लीजन्स में देयर इज वेयर एंड टियर ऑफ द टिश्यू और द जॉइंट्स। द जॉइंट्स व्हिच इज सब्जेक्टेड टू द वेट ऑफ द बॉडी, एंड द ligaments or the supporting tissue of the joint there are tearing, especially like the spine में हो या hip joint में हो या knee joint में हो या ankle joint में, वहाँ पर ये chronicity में ये इस पर wear and tear होती है joint में। जैसा कि मैंने बताया कि फुटबॉलर्स में forcibly twisting of the knee joint होती है, repeatedly forceful twisting, forcibly twisting होती है knee joint के, जिससे फाइब्रोकार्टिलेजिनस मेनिस्की, स्पेशली द सेमिनल कार्टिलेज ऑफ द नी जॉइंट, सेमिनल कार्टिलेज ऑफ द नी जॉइंट आर डिटेच्ड, टेयरिंग डिटेच्ड, ये यूजुअली फुटबॉलर्स में होती है। तो दिस टॉर्न पोर्शन ऑफ meniscus which detached remains in the joint permanently, it is called joint moise. So this joint moise, it restricts the movement of the joint and painful joint होता है। तो chronic mechanical injuries to the joint, just like the arthritis deformans. Arthritis में joint swelling होती है, inflammation होती है, restricted movement होती है, बाद में fibrous tissue बन जाती है, जिसकी वजह से उस joint पे movement नहीं होती, बड़ा painful होता है। Next, the sprain, subluxation or dislocations. ये जब forcibly the joint, when it is forcibly directed in one portion beyond the elasticity of the ligament, यानी ये joint है, अगर ये फर्स्ट क्या एल्बो जॉइंट है, इसकी मैक्सिमम मूवमेंट यहाँ तक है, अगर इसको फोर्सिबली इस डायरेक्शन में और ज़्यादा प्रेस करे पीछे की तरफ, तो दिस विल रिजल्ट इन डिसलोकेशन। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? व्हेन एनी जॉइंट इज फोर्सिबली डायरेक्टेड इन वन पोजिशन अगेंस्ट द इलास्टिसिटी ऑफ द लिगामेंट ऑफ दैट जॉइंट, दिस result in subluxation or the dislocation, right? So it means that when the joint is forced or moved in one direction beyond the limits, उस limits से जो permitted by the elasticity of the ligament की जो elasticity है वो एक हद तक permit करती joint की movement को। अगर इस जॉइंट की मूवमेंट के बियॉन्ड ऑफ दैट इलास्टिसिटी अगर फोर्सिबली फोर्स लगा के उसको उस डायरेक्शन में पुश कर ले, तो ये रिजल्टिंग इन स्प्रेन और डिसलोकेशन। इसमें होता क्या है, ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द लिगामेंट्स और कैप्सूल,
laceration of the ligaments, capsule, and severe the injury to the cartilage, there may be hemorrhages, right? Ligaments ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं, टेंडिन्स ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं, कैप्सूल जॉइंट के ओवर स्ट्रेच हो जाती है, जिससे वो लूज हो जाते हैं और वहाँ पे ब्लीडिंग भी होती है, ब्लड कलेक्शन होती है। तो इसका इफेक्ट क्या होगा इस डिसलोकेशंस का? यानी फोर्सिबली आपने बियॉन्ड इसके इलास्टिसिटी, जो परमिटेड इलास्टिसिटी है, इसके बियॉन्ड आपने इसको पुश किया, लिगामेंट ओवर स्ट्रेच हो गए, कैप्सूल ओवर स्ट्रेच हो गया, ब्लीडिंग हो गई जॉइंट। इसके इफेक्ट्स क्या होंगे? वो जॉइंट डिसेबल हो जाएगा, उस जॉइंट पे मूवमेंट नहीं होगी, बिल्कुल फ्री हो जाएगा। इवन आफ्टर हीलिंग, अगर हीलिंग हो भी जाए फिर भी वहाँ पे अनस्टेबल होती है, क्योंकि इसके लिगामेंट्स या स्पोर्टिंग टिश्यू जो है वो लेंथनिंग हो गई, उनकी लेंथ बढ़ गई और स्ट्रेच हो गए, तो जिसकी वजह से वो जॉइंट डिसेबल होगा, फ्लोट करेगा और उसमें मूवमेंट नहीं होगी। सो this dislocation may be caused by direct or indirect blows, fall, muscular contraction, disease वगैरह, ये indirect है। डायरेक्ट तो ट्रामा हो गया ना, लेकिन इनडायरेक्ट जो है वो गिर गया उस पर, या कोई डिजीज़ है, जॉइंट्स की डिजीज़ है, आर्थराइटिस है, या और कोई डिजीज़ है जिसकी वजह से हो जाती है। और इसके अलावा बच्चों में, चिल्ड्रन में, देयर में भी सेपरेशन ऑफ एपिफिसिस are more common, or due to the paralysis of the muscle weak होता है, या atrophy होती है मसल की, this result in a dislocation, especially of the shoulder joint. Now difference between the dislocation and fracture क्या होगा? The lesion within the vicinity of the joint. Dislocation में lesion joint के अंदर ही होता है, और restricted movement, एंड वहाँ जॉइंट में चूँकि वो क्रेपिटेशन होगा, जबकि बोन फ्रैक्चर में भी जब आप उसको फ्रैक्चर में क्रेपिटेशन होगा, बोन एंड स्किन, सॉफ्ट टिश्यू वगैरह, उसमें डिसलोकेशन में जो बोन का जो एंड है वो सॉफ्ट होगा, जबकि फ्रैक्चर में रफ होगा, स्पाइकी होगा। एज डिसलोकेशन का एज कैसे मालूम करेंगे? तो इसका ये है कि अमूमन वहाँ ब्रूसेस होंगे, एब्रेजन होंगे एक्सटर्नली, जैसे कि ब्रूज में पहले बताया कि ब्राइट रेड कलर फर्स्ट डे में, दैट इज ड्यू टू द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद ब्लूइश ब्लैक होता है 2 से 3 दिनों में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की वजह से। फिर इसके बाद ब्राउनिश डिस्कलरेशन होती है 4-5 दिन, हीमोसाइड्रिन की वजह से होती है। इसके बाद येलो डिस्कलरेशन होती है, हफ्ते से 14 दिन तक येलो डिस्कलरेशन शुरू हो जाती है, दैट इज बिलिरुबिन की वजह से। फिर इसके बाद जैसे बताया पहले, क्लॉट ऑर्गेनाइजेशन 3 दिन में होगा, और ग्रेनुलेशन टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू 1 वीक में बनेगा, 10 दिन में सॉफ्ट कैलस बनेगा, और इसके बाद 1.5 मंथ उसके बाद हार्ड कैलस, उसके बाद रिमॉडलिंग 6 महीने के बाद सॉफ्टनिंग ऑफ। इन दिस वे यू कैन टेल द एज of this dislocation as well as the fraction of the bones. That's all.